in public will soon replace scrolling reels in public. अभी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार फ़ोन मत चलाओ तुम बैठे हुए पब्लिक में, but over time you can see a lot of people hunched over their phones and they're scrolling through something, right? Most probably it's reels, your TikToks, or whatever is available in your country. We will very soon see a world where more and more people would be actually talking to their AI on their phone, and they would actually be coding something or talking to it or using the thing that they have coded. So we can actually end up in a situation where there are more apps than there are users. Some people have already predicted that this would happen. We don't know a timeline of when this would happen, but it's very soon that we will see production ready software being deployed from phone. In fact, we are already seeing it. It's just that people who are normal, people who are not as technical as software engineers, they don't know how to do it just yet, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे फड्डा अटकता है एंड हम लोग उसे ओवरकम नहीं कर पाते. आज आई वाज डिप्लॉइंग समथिंग एंड उसका फिक्स बहुत सिंपल था. आई जस्ट नीडेड टू रिप्लेस माई API कीज इन नॉर्मल लैंग्वेज, बट दैट मीन्स इज कि एक बहुत ही छोटे सा स्टेप बैक लेना था एंड उसके बाद वो चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन अभी करंट AI सिस्टम्स जिस तरीके से बने हुए हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं नहीं हाउ टू ऑलवेज ब्रेक थ्रू द वॉल, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंट्रैप्शंस लगाएंगे कि किसी तरीके से वो चीज़ काम कर जाए. यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट. यू कैन जस्ट सिंपली टेक अ स्टेप बैक, डू इट राइट एंड देन गो थ्रू इन लाइक वन स्टेप. यही चीज़ ऐसी है जो एक इंसान को बेहतर पता होती है एक मशीन से, एटलीस्ट अप until now. The day we solve this, I think software engineering as a job will no longer exist. Like we will no longer be coding anymore.